Good morning, students. How are you? Hope everyone is well. Okay, so today we are going to start our new chapter, that is chapter 12, Heron's formula. In this chapter, we will learn the thing that how to find the area of the triangle if you have three sides is given. ठीक है, अगर आपको three sides given है, then how you can find the area of the triangle. ठीक है, so first of all, what is Heron formula? That let me know this. So first in this you have to find S, where S is semi-perimeter. S is your semi-perimeter. And how to find S? That is A plus B plus C upon 2, where A, B, C are the sides of the triangle. And so area of triangle will be under root S, S minus A, S minus B and S minus C. This is the formula which we will use to find the area of the triangle. So now we are going to start question number first. As we are doing first question, second you can also do, third also you can do, ठीक है, and fourth is also similar like that. So question number first, that is given a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. You have given side A. आपको side given है, that side of the triangle is A and the triangle is an equilateral triangle. Means you have given a triangle which is an equilateral, so it means all sides will be A. And so first of all means you can say the value of A is A, value of B is also A and value of C is also A. All are A. Now you will find S. So S is A plus B plus C upon 2. The value of A is A plus A upon 2. That is 3A upon 2. So S, that is semi-perimeter, will be 3A upon 2. So the area of triangle is under root S, S minus A, S minus B, S minus C. So under root S, the value of S is 3A upon 2 and again 3A upon 2 minus A, and the value of A is A, again S, that is 3A upon 2 minus B, that is again A, and S, that is 3A upon 2 minus A. So after putting the values, as you see that I put all the values, ठीक है, जो फॉर्मूले में थी सारी मैंने वैल्यूज में फिल की हैं. S की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ठीक है, A B C. Now simplify it. So this is a fraction, this will remain as it is. This is a fraction, तो fraction को आप सॉल्व करने के लिए यूज आर यूजिंग LCM और you can also use cross multiply. So it become your 3A minus 2A upon 2 and again here 3A minus 2A upon 2 and here is also 3A minus 2A upon 2. So it becomes under root 3A upon 2 into. Now you can see 3A minus 2A, yes, it will be A upon 2. In the same way, when you subtract it, it becomes also A upon 2. When you subtract this, it becomes also A upon 2. So now you can see in square root, how to find the square root, that we already discussed in our 8th class. So 8th class में जब square root निकालते थे, then we use pairing. आप pairing करते थे prime factorization में, तो in the same way we will do also here pairs. So when you make the pairs, जब आप pairs बनाते हैं, you can see there are two pairs, A upon 2, A upon 2. One pair is this, A upon 2, A, second pair is this. तो pair में से आप एक numbers बाहर लें. A upon 2 into A upon 2 will be outside and square root में आपके पास सिर्फ रह जाएगा root में 3 because 3 has no pair. Okay. So now multiply it
बिकम ए स्क्वायर अपॉन 4 एंड स्क्वायर रूट में आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, but the question is something more, that if its perimeter is 180, now understand perimeter is given, तो जब भी perimeter given है तो सबसे पहले आप perimeter ही लगाएंगे अपने, ठीक है। so the perimeter is 180 centimeter, so for this one all the has perimeter 180, it means perimeter means sum of all sides a plus b plus c is equal to 180. You can write here 180 because all sides are equal, so a plus b plus c is equal to 180. The value of a is a, value of b is a, value of c is a, that is equal to 180. So when add all these, it become 3a. Then a is equal to 180 upon 3, so it becomes 60 centimeter. Got it? So value of a means side आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, उसने उसके बाद क्या पूछा है कि पेरीमीटर अगर 180 है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, ये सिग्नल बोर्ड। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ नो नीड टू यूज अगेन योर हीरोन्स फॉर्मूला because you have all the sides is of 60 centimeter, just put the value there। जो भी हमने फॉर्मूला, जब भी हमने एरिया फाइंड किया है, we will put this a there। so the area of the board, area of signal board will equal to a square, तो a की वैल्यू कितनी मेरे पास 60 square upon 4 under root 3। When you do the 60 square, it becomes 3600 upon 4 root 3. So it is 900. So 900 root 3 centimeter square will be the area, ठीक है। तो ये जो आपका क्या आ गया इस तरीके से एरिया, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेकंड इज आल्सो सेम। आई एम गोइंग टू डू योर क्वेश्चन नंबर okay, so question number 4th that I am now going to do. So question number 4th is, what is that? So question number 4th is given, find the area of the triangle two sides of which are 18 and 10. So you will write there that A is 18 centimeter, B is 10 centimeter and the perimeter is given। आपको अगर और क्या given है, perimeter given है, तो जब भी perimeter given है तो I told you that apply the formula of perimeter। सो फर्स्ट सी हमें नहीं पता है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट हीरोन्स फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड इफ यू हैव ऑल द थ्री साइड्स, ठीक है। तो फॉर दिस वन फर्स्ट आई विल राइट दैट इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 42 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ a इज 18 प्लस b इज 10, C आपने फाइंड करना है, सो इट बिकम 28 प्लस C इज इक्वल टू 42, देन C इज इक्वल टू 42 माइनस 28, सो C विल बी योर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ C आपके पास है, A भी है, B भी है, नाउ वी कैन फाइंड द एरिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका फोर्थ सॉल्व कर ही रहे हैं, तो यू विल राइट फर्स्ट एस, आपने पहले इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, दैट इज एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18,
value of B is 10, value of C is 14 upon 2. So now add all these values, it becomes 12 and 1, 2, 3, 32 upon 2. Sorry, 42 upon 2, which become 21. So you see that semi-perimeter is 21. Now we will apply the formula. So area of triangle will be S under root S minus A, S minus B and S minus C. So you can put the values S is 21 under root 21 minus A is 18, again 21 minus B is 10, then again 21 minus C is, अभी हमने फाइंड किया था, that is 14. So simplify it, 21 as it is, 21 में से 18 गए, 3, 21 minus 10, it become 11 and 20 minus 4 करेंगे तो it become 7. ठीक है, okay. So now do the prime factorization. So 21 क्या factor से बनाओगे, it become 3 into 7 into this 3, 11 itself a prime number, 7 is also a prime number. So you can see in this square root we have prime number कौन कौन से हैं, this 2 3 and this 2 7. So we can take 3 as well as 7 as common and in the square root it will be 11. ठीक है, so now multiply, it become 21 under root 11 centimeter square will be the area for this triangle. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इन द क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इसके जैसे 6 में क्या गिवन है देखो, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है. आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल होते हैं, हैज पेरीमीटर, देखो फिर से पेरीमीटर गिवन है. इट मींस इन दिस केस आप फिर से a प्लस बी प्लस सी पहले लगाएंगे जो कि हमने भी यहाँ पे भी यूज किया. ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12, इक्वल साइड 12. ठीक है, इट मींस a भी आप क्या ले लोगे 12. ठीक है, फॉर फिफ्थ क्वेश्चन b की वैल्यू क्या ले लो आप 12. तो क्वेश्चन में बोल रहे हो आपसे a is 12, b is 12 और c आपने फाइंड आउट करना है और आपको क्या गिवन है पेरीमीटर. तो a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू 30. You are given 30. So now you can see this sum is just like of this one. You can put the value of a, b and you can find the value of c. After finding c, you can apply your Heron's formula, means you can find semi-perimeter, and after finding semi-perimeter, you can apply this Heron's formula to find the area of the triangle. ठीक है, so like this students you can solve your 12.1. If you have any doubts, you can ask me anytime. Thank you students, have a beautiful day.